बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो। टूट जाए शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर, ऐसा शीशा की तलाश करो, ऐसा शीशा की तलाश करो। So my dear friends, in this video you will get clear some questions from NCERT books. So question number 6 to question number 11. So there are 10 questions is here. आपका ये ड्यूटी बनता है ये सारे क्वेश्चंस को आप अच्छा से वॉच करो, फिर नकल लगा के दिल से तब तक प्रैक्टिस करते रहो जब तक आप परफेक्ट नहीं बन जा रहे हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, प्रैक्टिस टिल यू परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। रिमेंबर इट, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट, द मोर यू प्रैक्टिस एंड स्टडी द बेटर you are. Excellence is an art. It is the regular habit of practice. Remember it. Now we will discuss about find the intervals in which the following functions are strictly increasing or strictly decreasing. NCERT questions number 6. So my dear friends, first question, fx equal to x square plus 2x minus 5. What we'll do here, so you find out f dash x. So that is 2x plus 2 hai. Clear? So this is equal to 0. What we'll do here, so this is minus infinity, say plus infinity, and so this is minus 1 plus minus. So this part is strictly decreasing, and here, so this is strictly increasing. Clear? So that means strictly decreasing in minus infinity, say minus 1, strictly increasing in, so that is minus 1, say infinity. Now, so find the intervals in which the following functions are strictly increasing or strictly decreasing. Second question, fx equal to 10 minus 6x minus 2x squared. So what you do here, first you find out the derivative, minus 6 minus 4x. Clear? So this is f dash x equal to 0 kar do. So this is f dash x equal to 0. So what you will get, so this is minus 4x equal to 6. So this is x equal to minus 6 by 4 minus 3 by 2 है, and you draw a number line, so like this is infinity, minus infinity, and so this is minus 3 by 2 है. Clear? यहीं पर coefficients of highest power of x is negative, and so this is positive. So this is the interval of strictly increasing, and this is the interval of strictly decreasing. ये आपको ध्यान में रखना है. Strictly increasing means क्या? जहाँ पे f dash x is positive. Strictly decreasing का मतलब है जहाँ पे f dash x is negative. Now find the intervals in which the following functions are strictly increasing or strictly decreasing. Questions number 6 from NCERT and C part. So like this, and then what you will do, you will find out f dash x. So that is what, minus 6x square minus 18x minus 12. And if you take common minus 6, so x square plus 3x plus 2. So what you do here, so this is 6 and x plus 1 into x plus 2 hai. And you will draw a number line, this is infinity, minus infinity, and so this is minus 2, minus 1. Here is negative, negative, positive as well as negative. Clear? So if is strictly decreasing is here, and here is also strictly decreasing, but here is strictly increasing. The interval strictly increasing is minus 2, say minus 1. The interval strictly decreasing is minus infinity, say minus 2, as well as minus 1, say infinity here. Strictly increasing means f dash x is positive. Strictly decreasing means f dash x is negative. You have to remember it. Now find the intervals in which the following functions are strictly increasing or strictly decreasing. So this is question number 6 from NCERT E part, fx equal to x plus 1 ka whole cube as well as x minus 3 whole cube. What you do here, you will differentiate it f dash x and apply product rule. 3 into x, इसका differentiate करो, इसको fix रखो, x minus 3 का whole cube plus इसको differentiate कर लो, so this is x plus 1 का whole cube, x minus 3 whole square. What you do here, you take common 3. सो ये दोनों में जिसका इंडेक्स पर कम है उसको कॉमन ले लो, ये दोनों में जिसका इंडेक्स पर कम है उसको कॉमन ले लो. सो लाइक दिस, ठीक है. यहीं पे बचे हुए कौन है, ये तो होल स्क्वायर, ठीक है. सो दिस इज x minus 3 and here is what, so this is x plus 1. So it will get 3 times of x plus 1 का whole square, x minus 3 का whole square, 2x minus 2 है. Clear? And then what you do, you will draw a number line. So this is infinity minus infinity. Here, if you get any type of perfect square, you don't represent them on the number line. You will skip them, and you will consider the odd power factor. So that is 1. So this is plus, this is minus. Here is strictly decreasing, and here is, so this is strictly increasing. So my dear friends, you know already a function's fx is strictly increasing if f dash x is positive. Strictly decreasing in f dash x is negative. Clear? So this so you can say at x belongs to minus infinity, say 1. So this is f dash x is negative. So this implies that f is strictly decreasing.
at x belongs to 1 say infinity. So this is f dash x is positive. So this is if is strictly increasing, nothing else. Now, so that y equal to log of 1 plus x minus 2x by 2 plus x, where x is greater than minus 1, is an increasing functions of x throughout its domain. So what you'll do here, so this is y is equal to this, y equal to log of 1 plus x minus twice x by 2 plus x. What we'll do here, so this is dy dx, so that is what, now 1 by 1 plus x, and then what we'll do, procedure apply karo. So this is 2 plus x ka whole square, 2 plus x, and then derivative of this is 2, minus 2x, and derivative of this is 1. So it will get 1 by 1 plus x. Okay, and so this is 4 plus 2x minus 2x, so this is 2 plus x ka whole square. Okay, so this is what, 1 plus x, and so this is 2 plus x ka whole square, so this is 2 plus x ka whole square minus 4 into 1 plus x. Okay, so this is equal to is what, okay, 1 plus x, and so this is 2 plus x ka whole square, and then what to write, this is 4 plus x square plus 4x minus 4, and so this is minus 4x. So minus, so this is 4x cancel, so it will get, so this is x square by x plus 1 into x plus 2 ka whole square. So domain is x is greater than minus 1. Here x is greater than minus 1, so this is positive. Dy dx is positive here, so you can say dy dx, so that is positive. X is greater than minus 1, but when x ka value is 0, so you will get, so that is this here. So therefore y is an increasing function. Here y is an increasing function. Increasing functions का मतलब है first derivative is greater than or equal to 0. So you can say dy dx is greater than and equal to 0. X, here x this positive, but when x is 0, so this one is 0. Here try to understand it. This is a fantastic question. इसी type का question generally board exam में पूछा जाता है. Now find the values of x for which y is equal to x into x minus 2 whole square is an increasing function. Clear? So increasing functions means क्या, dy dx is greater than equal to 0 है. So this is solution. So here y is equal to simply multiply कर दो. So this is x square minus 2x whole square. So this is dy dx. dy dx is what, 2 into x square minus 2x into, so this is 2x minus 2. Clear? So it will get, so this is, you take common 2, so this is 4, and here is x minus 2. If you take common 2, so this is x minus 1. Okay? Clear? So this is so look here, so here number line, so this is like this, infinity. So this is 0, this is 1, this is 2, plus minus, so like this. Okay? Since y is an increasing function, okay, so therefore dy dx is greater than equal to 0. So therefore ax belongs to positive. So this is 0 say 1 union, so this is 2 say infinity. This is the values of x. Clear? This is also a fantastic question for board exam. Now prove that y is equal to 4 sin theta by 2 plus cos theta minus theta is an increasing functions of theta in this interval. So here y is equal to is what? Clear? So this is 4 sin theta by 2 plus cos theta minus theta. So it will get, so this is dy d theta. dy d theta is what? So this is 2 plus cos theta ka whole square and 2 plus cos theta into 4 sin theta minus 4 sin theta into cos theta ka derivative. So this is sin, so into minus sin theta. So this is sin theta, and so here is what? So this is minus 1. So it will get, so this is 8 sin theta, okay, 8 sin theta, and so this is what? 8 sin theta, and so this is 4 sin theta cos theta plus 4 sin square theta. So this is by 2 plus cos theta ka whole square minus 1. If you take common 4, okay, so it will get, so this is sin square theta plus sin theta cos theta and plus 2 sin theta. So this is by 2 plus cos theta ka whole square. So in the first quadrant, so this is 0 से pi by 2, clear? So this is in the first quadrant, so that means क्या, sin square theta is positive है,
clear, greater than equal to 0, this is also greater than 0, this is greater than 0, clear. So that means what we'll do here, जैसा cos थीटा का वैल्यू 0 तो ये तो क्या होगा 2 + 1 3, ठीक है, but थीटा इज पाई बाई 2 सो दैट इज 4 है. सो माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर, हियर हमें क्या दिखाना है ना, सो दिस इज पॉजिटिव है, ठीक है, क्लियर. सो कोई भी एक वैल्यू यहीं पे ले लोगे तो आपको क्या मिलेगा, कोई भी एक वैल्यू 0 से पाई बाई 2 पे कोई भी एक वैल्यू, जैसा sin 30 का वैल्यू ले लिया, sin 45, sin 60 लाइक दिस, ठीक है, ये वैल्यू पुट करो तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, ठीक है. तो यार जैसा सो दिस इज, देखो ये sin स्क्वायर थीटा, सो दिस इज व्हाट व्हाट विल गेट, सो दिस इज, ओहो नहीं इसको गलत हो गया. Now prove that y is equal to 4 sin theta by 2 plus cos theta minus theta is an increasing function of theta in 0 से pi by 2 है. This is y, इसका डेरिवेटिव फाइंड करो. So this is 2 plus cos theta का whole square. So this is 2 plus cos theta and here is what? This is 4 and sin theta का डेरिवेटिव cos theta. ठीक है, माइनस, सो दिस इज 4 sin थीटा एंड इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सो दिस इज आल्सो sin थीटा माइनस sin थीटा, सो दिस इज माइनस 1 है, ठीक है. सो व्हाट विल गेट, सो दिस इज 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा एंड सो दिस इज 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है. ये दोनों से 4 कॉमन ले लो, सो दिस इज 8 cos थीटा प्लस 4, ठीक है, 8 cos थीटा प्लस 4 एंड दिस इज 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, क्लियर. सो दिस इज what will get here, so this is whatever you will consider in this range पे ये क्या होगा, ये more than 1 है, ठीक है. so that means क्या, cos थीटा कोई इस रेंज पे whatever you will consider ये more than 1 है, so this is जब ये 1 होगा, ठीक है, क्लियर. सो दैट मीन्स 1 कब होगा ना, जब थीटा का वैल्यू देखो पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 जब होगा ये तो 0 है, 4 नीचे 4 दैट इज 1 है, क्लियर. इन अदर केसेस में पॉजिटिव होगा, लेकिन थीटा का वैल्यू जब पाई बाई 2 होगा ये 0 होगा, लाइक दिस. इसीलिए क्या बोला है ना, y इज इंक्रीजिंग फंक्शन, सो देयरफॉर dy d थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो दिस इज y इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है. इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0. Now prove that the logarithmic function is strictly increasing on this. Suppose if you consider that functions is like this, let fx equal to is what, log x है, ठीक है. तो इसका डेरिवेटिव इज व्हाट, सो दिस इज f डैश x इक्वल टू 1 बाई x. अभी इसका मतलब क्या है, r प्लस, 0 से इन्फिनिटी मीन्स क्या, r प्लस. सो दिस इज पॉजिटिव फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी है, सो देयरफॉर f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है. जब फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा यू कैन ड्रॉ ए कंक्लूजन्स दैट f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. Prove that fx equal to x square minus x plus 1 is neither strictly increasing nor strictly decreasing on minus 1 से 1. So here what you do, so this is देखो fx equal to x square minus x plus 1. So this is f dash x. F dash x is what? Now 2x minus 1. ठीक है, तो यार so this is 2x minus 1. तो ये क्या होगा, देखो 2x minus 1, ठीक है, ये दो रिजल्ट देगा. सो दिस इज व्हाट 2x minus 1, सो दिस इज नेगेटिव. ये कब होगा ना, जब फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 0 से 1, ठीक है. एंड सो दिस इज सॉरी माइनस 1 से 0, ठीक है, 2x minus 1 एंड सो दिस इज पॉजिटिव कब होगा, सो दिस इज सपोज x का वैल्यू हाफ है, ठीक है, क्लियर. सो दिस इज 2x minus 1 यहीं पे फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 0 से 1. So like this. So that means क्या, sometimes this function is negative and sometimes this function is positive. Clear? Sometimes strictly increasing है and so this is strictly decreasing है. Clear? कोई भी functions जब एक कंक्लूजन देगा आइदर पॉजिटिव होगा नहीं तो नेगेटिव होगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. एक्चुअली ये जो फंक्शंस है देखो इस फंक्शंस का जो ग्राफ है, सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. इसका जो ग्राफ है देखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3/4. इफ यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, जब हाफ है क्लियर ये 3/4 है, सो लाइक दिस, ठीक है. एंड द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शंस इज लाइक दिस, ये हाफ है. जब x का वैल्यू 1 है तो ये 1 है, सो लाइक दिस इज 1 एंड x का वैल्यू जब माइनस 1 है, ठीक है, सो दिस इज माइनस 1 पे क्या देगा, ये 3 देगा. देखो सो दैट मीन्स क्या, ये सिचुएशन हो रहा है ऐसा कर्व, ठीक है. देखो फ्रॉम हियर टू हियर ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया एंड फ्रॉम हियर टू हियर सो दैट इज इंक्रीजिंग है. तो यार सो दैट में -1 से यहीं पे हाफ देखो,
and so this is half say 1, so that is what half say 1 पे इंक्रीजिंग है। कोई एक कंक्लूजन नहीं है, दो आउटपुट आ रहा है, दो रिजल्ट आ रहा है, सो इसलिए ये जो फंक्शंस है नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। My dear friends, in this video you have got 10 fantastic questions from NCERT book, questions number 6 to questions number 11। आपका ड्यूटी बनता है ये सारे क्वेश्चंस को अच्छा से वॉच करो, फिर लगन लगा के दिल से प्रैक्टिस करो। इफ़ यू वांट टू बी गुड इन मैथ्स, इफ़ यू वांट टू बी good in maths for board exams or JEE exams, whatever is there, clear? So that depends on 3 Ds. So that means you have to discipline, you have to determine, you have to dedicate it. So my dear friends, if you follow these 3 Ds, then you can get very good marks. कोई भी एग्जाम में आप हार नहीं सकते हो। So my dear friends, clear? Thank you very much for watching. Don't forget to subscribe my maths channel. All the very best for your better future.